Well, the Indian squad for the upcoming Afghanistan series has finally been announced and has got the big news. And the big news is that Rohit Sharma and Virat Kohli return to the format after more than a year. Rohit Sharma will be captaining the 16-member squad. But the big news also there is that the two big names, that is Hardik Pandya and Sky, miss out because of injury concerns. Well, I've got with me the former selectors of BCCI. I've got with me Sabah Karim as well as Kiran Mori to discuss this selection special on Jio Cinema, which is the home of the blues. And I've got a song running in my head. Intaha ho gayi intezar ki, because of the delay. Sabah, what could possibly be the reason for this late announcement? Well, the only reason trophy matches, I think because it was such a big call to make for India, that is why I just feel that BCCI wanted all 5 selectors to be there. Along with maybe the coach, one is not sure whether the coach was there or not, but there has to be one person from the team management to be as a representative. And I think that is the only reason in announcing the team for the Afghanistan T20. So let me know what does Kiran think of this, because Kiran, आप इस system को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. तो आपके अनुसार क्या कारण रहा होगा कि इतना वक्त ले लिया ये टीम अनाउंसमेंट में? नहीं, ये वक्त क्यों लिया मुझे मालूम नहीं. मुझे लगता है मैं तो साउथ अफ्रीका टूर जो खिलाड़ी हमारे वो वापस आ गए टीम में 2 साल के बाद. जी हाँ, बिल्कुल 14 महीने बाद. तो इसी के साथ आपको जरा स्क्वाड जो है वो दिखा दें. लेट्स टेक यू थ्रू दैट. मेरे को कि 2 साल के बाद आपके विचार बदल गए थोड़े से. मुझे लगता है नहीं क्या विचार थे उनके पहले. अभी उन्होंने लाया कि दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में भी और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी, और दोनों फॉर्म में दिखा. और जैसे ही रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, जी हाँ, ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी थी, लेकिन रोहित शर्मा विल बी कैप्टनिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज. डू यू सी हिम captain the T20 World Cup as well? There is no doubt about that now, Ridhima. First on emotion. Number 2 is pragmatism. I say emotion, let me elaborate further. Is because of this World Cup, heart-wrenching, more experience, but they also feel this will maybe the last chance for these 2 stalwarts of Indian cricket to the past several years in all 3 formats. So they feel that, especially more so because this World Cup is to be scheduled in US and West Indies. They wanted to play like Virat Kohli, who can really control the innings and play many more match-winning innings for his side. Yep, and the hunger in these two is still there and it's out there. But more importantly, ये जो series है, ये World Cup से पहले वो आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज है. इसके बाद IPL, उसके बाद World Cup. तो रोहित शर्मा को रखने का ये नजरिया भी है कि सिलेक्शन में भी उनकी राय ली जाएगी. नहीं, बिल्कुल हमेशा जो उनकी भी राय ली जाती है. जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी भी राय ली जाती है. टीम मैनेजमेंट होती है, जो कोच होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ में भी जो प्लेयर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, उनकी भी राय ली जाती है. उसके बाद आपके पास सिलेक्टर तो है, और अजीत अगरकर उनके जो चेयरमैन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी क्रिकेट खेले हैं और काफ़ी क्लियर माइंड से आते हैं. आई थिंक इनकी सबकी राय लेने के बाद ही टीम बनती है. Right. Now, since 2022, we've tried 4 different captains. Now, the fact that Rohit Sharma comes back to the scheme of things captaining, does it show that we are looking for that consistency in captaincy, and that is why Rohit Sharma is our best option? Consistent. It is the captain, Rohit Sharma, who leads the way, who's shown us the right path to play white ball cricket. That is why India has tasted enormous success in the One Day World Cup. And I think if India can continue in the same aggressive manner, I'm sure with Rohit Sharma at the top, we can jolly well go on and win the World Cup. But I'm only wondering, what is Hardik Pandya thinking at home right now or wherever he is? Because ये किस तरीके का संकेत होगा हार्दिक पांड्या के लिए, ये जिस तरीके का सिलेक्शन हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं, ये देखो, पहले तो थिंकिंग है, सिलेक्टर की थिंकिंग, हमको मालूम नहीं बिल्कुल इनसाइड क्या चीज़ें चली है, पर बिल्कुल हार्दिक एक से फिट हो जाते हैं ना, तुरंत टीम में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मैचेस खेलना भी बहुत ज़रूरी है बिफोर दिस वर्ल्ड कप. I'm just thinking what the young guns go through is because, you know, when these experienced out there superstar cricketers are actually going through this kind of tough selection spots, well, the young guns have got a lot to prove ahead. But more importantly, Rohit Sharma, the kind of display and the kind of change in the way he plays, he displayed in the ODI World Cup, you know, coming in explosive, gave that kind of start. Do you see him in the same vein going into this particular format as well? More so now, Ridhima, and no one to beat Rohit Sharma in terms of experience. Right. But also experience coming in the form of Virat Kohli, क्योंकि इस फॉर्मेट में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है वो फिनोमिनल है. उन्हें आप किस तरीके का रोल निभाते हुए देखते हैं इस सीरीज में और फिर अगर वर्ल्ड कप खेलते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल विराट कोहली नंबर 3 बैटिंग करते हैं, पर आप देखते हो तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट. राइट, नंबर 3 की आपने बात की और आप उन्हें कहीं किसी और पोजीशन पे खेलते हुए देखते नहीं. बट लेट मी आस्क यू सबा, इज ही एप्ट फॉर नंबर 3 spot or do you see him play at some other position? That's the only position for Virat Kohli.
West Indies in the Caribbean islands, we have seen the kind of wickets Indian team has encountered. Slow surface, you need more experience. You need a batter who can generate power. You need someone who can use good footwork against spinners, and I think that's what India is going to face. So that is one reason why Virat Kohli is so essential to come in at number 3 and set the pace for India, and also remain right till the end and play many more match-winning, innings for India. Right, given the track that you're talking about, the conditions that India will be playing the World Cup in, and of course this is where we start the whole selection process and stick by what we're going ahead, make a plan around it. So Rohit Sharma opening करे, but who makes the cut along with him? क्या वो यशस्वी होंगे या शुभमन होंगे? मेरे लिए यशस्वी के साथ जाऊंगा. Right, now coming of course to the Pacers, यहाँ पे बुमराह और सिराज को रेस्ट दिया गया है. अब एक स्पॉट है जहाँ पे आपके जो खिलाड़ी अर्शदीप हैं, आवेश हैं, साथ ही साथ मुकेश हैं, इन तीनों में से किसी को वो एक स्पॉट मिलेगा, या फिर आप वर्ल्ड कप में देखते हैं कि इन तीनों में से 2 लोगों की जगह बनती है. बिल्कुल, देखो मेरे को अर्श तो दुनिया में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पसंद नहीं है. जी, पेसर्स की बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पिनर्स, एंड वन बिग नेम दैट इज मिसिंग फ्रॉम दैट स्क्वाड इज रविंद्र जडेजा. सो you've got Washi, you've got Kuldeep, you've got Bishnoi. Now how many spots are the spinners actually fighting for? Eventually, you can pick only 15. So I see 4 pace bowlers and maybe 3 spinners in the squad of 15. And if that is the case, then Ravi bowler in T20I. So I see Ravi Bishnoi there. But eventually, I think India will opt for 3 spinners and 4 seamers. Out of these 4, 2 seamers, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, and from these 3, Arshdeep is another certainty. And maybe Mukesh Kumar will have an edge over Ravish Khan. That's the way I look at it. Now, personally, who is that particular player that you've got your selector eyes on from this particular series? Yeah? Rinku. ये और तिलक रिंकू दोनों को साथ में लेके जाएंगे. चलिए इसी के साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जियो सिनेमा पर, आपको क्विकली एक बार शेड्यूल दिखा दें इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज. Who do you see winning this series right before the World Cup, the last series before we get into the World Cup and the IPL? A perfect time for India to come good again, and I think India's track record at home has been exemplary. So I think I would expect India to win this T20I series with a big margin. I'm expecting a 3-0 win here for India. Right. अब देखिए जो वर्ल्ड कप है वो कि वेस्ट इंडीज यूएस में खेला जाएगा. ना अफगानिस्तान एक स्पिन हैवी टीम है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है भारतीय बल्लेबाजों के लिए. बिल्कुल, क्योंकि आप ग्रास के लिए भी. ऑलराइट, चलिए एक बार फिर आपको याद दिला दें कि 11 जनवरी को खेला जाएगा पहला T20 इंटरनेशनल मोहाली में. सिलेक्शन स्पेशल. Thank you so much. Sabah, thanks a lot, Kiran, for joining us on this very special show. This is the home of the Blues for a reason, because we get you all the updates. You stay tuned.